So the layers of the atmosphere, this we were doing the 3 layers. That is the warmer layer, thermocline layer, and this thing. मुझे लगता है मैंने सिर्फ warmer layer ही बताया है. Fine. There is a spatial and temporal variation as per the weather and climate. यहाँ पे we stopped, I guess, right? मतलब what does it mean? जहाँ जहाँ warm current है, the warmer layer will be thick, more. क्या होगा? More. So I am asking you one simple concept of, is cold water denser? Yes. Is saline water denser? Does salinity increase or decrease the freezing point? Decrease means? So freezing point को salinity increase करेगा, freezing temperature को या decrease करेगा? So with salinity can I say freezing point will decrease? मतलब जो 0 degrees पे होना चाहिए, that should occur at, that will occur at still lower temperature. With this background, yes, freezing salinity is going to increase the freezing, will decrease the freezing point. So salinity अगर बर्फ डालोगे, if there is salt, and if you try to freeze it, it will not freeze quickly, right? So why, how does the Arctic Ocean gets frozen? The upper part is frozen, why? उधर तो water saline है या fresh है? Glacial है, so that is fresh water. Can I say Arctic is freezing up Arctic Ocean? Ice age नहीं अभी. अभी हमने पेरी ग्लेशियल किया, वहां पे तो मेल्ट हो रहा है. So if चलो, do you agree with me? Arctic Ocean freezes during the winters and it melts during the summer season, right? If it's Arctic Ocean is freezing, that means that glacier should be saline. If ocean water is freezing, that means glacier should be saline. Yes or no? क्यों? सॉल्ट नीचे कहां से चला जाएगा? इवेपोरेशन के लिए हीट कहां पे है? वहां पे पूरा रीजन इज अ कोल्ड लेयर, सेम टेम्परेचर है, कोई नीचे ऊपर नहीं होगा वहां पे. ग्लेशियल फ्रेश वाटर से अगर बने हैं तो टेल मी हाउ द आर्कटिक ओशन इज फ्रीजिंग. देयर शुड नॉट बी आइस शीट्स ओनली, देन देयर शुड बी ओनली माउंटेन ग्लेशियर्स. 50,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा एरिया इज नोन एज एन आइस शीट, उससे कम एरिया इज नोन एज एन आइस कैप. 50,000 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया फ्रीज हो रहा है, आर्कटिक अंटार्कटिक, हाउ इज इट पॉसिबल? फिर भी स्टैलिनिटी तो है. That is because of the concept of brine rejection. What is that brine rejection? After you finish the temperature, fine. Brine rejection हो रहा है. Brine rejection means glacier, in simple language, in the most easiest language, glacier अपने अंदर का ice फेंक दे रहा है, अपने अंदर का salt फेंक दे रहा है, और अपने अंदर का salt फेंक रहा है, वो salt filled cold currents नीचे लेके आ रहे हैं. They are coming, bringing towards the tropics. So वहां पे रह रहा है only fresh water, and this fresh water then starts freezing. This is what is the concept of brine rejection. Brine means salt. So when the ice is freezing, आज घर पे जाके बहुत ज़्यादा सलाइन वाटर लेना, उसको फ्रीजर में डालना, और कुछ देर बाद जब फ्रीज हो गया तो देखना कि सॉल्ट पार्टिकल्स ऊपर ऊपर आए रहेंगे, नीचे पूरा बर्फ जमा रहेगा. It will throw away the salt particles. That is what is known as an brine rejection. क्यों?
Because of osmotic pressure. What is osmotic pressure? Because of osmotic pressure, मतलब pressure due to water. हमें नहीं जाना है डिटेल में what is osmotic pressure etc. प्रेशर डिफरेंस के कारण. So interesting thing about salinity, you will see how it keeps on changing. So इसलिए what happens when the ice melts during the summer season again, आर्कटिक के विंटर्स के बाद when the ice is melting during the summer season, वहाँ पे ऑलरेडी उसने सॉल्ट तो बाहर थ्रो कर दिया, वो सॉल्ट आ गया ट्रॉपिक्स में और वो सब जमा हो गया. And when the ice melts, what happens in the polar region is upper layer, even in the oceans, is the layer of fresh water, और नीचे का layer is the layer of saline water. इसलिए we say glaciers have the largest amount of fresh water in the world. Otherwise, had this brine rejection, salt को अगर salt crystals को had it not been throwing it out, then the glacier would also have been saline. Fine. Next point. In this point, first upper layer में the thickness of the upper layer, the thickness of the upper layer, thickness of the upper layer in the Pacific, in the Pacific is more as compared to the Indian and Atlantic Ocean. Comparative की बात कर रहे हैं हम, is more as compared to the Indian and Atlantic Ocean. Why? Because Pacific Ocean is biggest and इसलिए it has the maximum capacity to retain the heat. लिखने की जरूरत नहीं, देखो it is one of the huge water body and because of this when it gets heated वो बहुत time बाद heat होगा, but afterwards when it starts cooling it will also take time to get cooled. Getting it? So water in the Pacific will be very very warm and that is why जब Pacific Ocean से कोई भी cyclone आता है in India it becomes dangerous. Cyclone Oki, September, October, the season which is now coming, end of September, end of October, November, etc., the season which is going to come is going to be the cyclonic seasons. Why? Indian Ocean के कारण नहीं, but mostly due to the Pacific Ocean. The cyclones from the Pacific Ocean will enter through the narrow Strait of Malacca, through the Sunda Strait, and they will come towards India. जितना दूर आएंगे towards India, जितना दूर से आएंगे, they will spend more time on the oceans. जितना more time on the oceans they spend, they will pick up more moisture, and they will become more and more powerful. Getting it? May, June का cyclone should not be, April, May का cyclones are never powerful because they develop only due to heating of Bay of Bengal or Arabian Sea. And September, October का cyclones are very dangerous because they are the continuation of the cyclones in the Pacific. But इसमें exception था 2019, that is cyclone Fani. Cyclone Fani, though it developed in the Indian Ocean, it was very very powerful, which struck the coast of Orissa on May 3rd. Why? बाद में. Understanding? The maximum salinity, the maximum temperature in the Pacific, is seen along the eastern coast of Japan. Why? Tell me. Due to warm.
Similarly in the Indian Ocean, similarly in the Indian Ocean, enclosed seas, enclosed seas such as Red Sea, Red Sea, Persian Gulf record higher temperatures. Why enclosed sea has higher temperature? Because chote sea there is more evaporation. It is heated more. Yes, yes. Next point. Thermocline layer. Thermocline layer. Next. Zone 2. That is the zone 2 thermocline layer. Lies below the first layer. Lies below the first layer, which is characterized by rapid decrease in temperature with increasing depth, which is characterized by rapid decrease in temperature with the increasing depth. Can I say thermocline zone is not present in the polar regions? है thermocline zone in the polar regions? So straight है. You just remember that after 1000 meters, the temperature of the ocean after 1000 meters, the temperature of the ocean is more or less constant, that is 1 degree Celsius. This zone of cold denser water, ये थर्ड जोन को भी मैंने सेकंड पॉइंट में डाल दिया. This zone of the cold denser water is present all over the world, full stop. In the polar regions, this warm, this in polar region there is only one layer, that is of the, that is the cold layer, The vertical distribution of ocean temperature can be shown as below. Vertical distribution of ocean temperature can be shown as below.
Understood this diagram? Getting this? This is what we have drawn. ट्रॉपिक्स 0 to 60 डिग्री तक प्रॉपर 3 लेयर है ओशन के. उसके बाद 60 के थोड़ा ऊपर के बाद देयर इज ओनली वन लेयर, दैट इज द कोल्ड डेंसर वाटर, राइट फ्रॉम द सरफेस टू द डेप्थ. Clear? Can you tell me what is the importance of ocean water temperature? बस एक कंक्लूजन के लिए पता होना चाहिए. What is the importance of ocean water temperature? जहां बहुत कोल्ड है फिशेस कैन सर्वाइव. जहां बहुत वार्म है ऑब्वियसली बायोडाइवर्सिटी विल बी हाई. जहां वार्म है मतलब ऐसा नहीं है टेम्परेचर इज अराउंड 50-60 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री टू 30 डिग्री सेल्सियस के आसपास का टेम्परेचर होता है. सो एक्सट्रीमली कोल्ड एंड एक्सट्रीमली वार्म इज नॉट गुड. So can I say temperature determines biodiversity, temperature determines density, temperature determines the current ka direction. Now listen, have you drawn this diagram? Can I change it a bit? आपको change वाला नहीं करना है. यहाँ पे is it getting the vertical sun rays throughout the year more or less between 30 degree to 30 degree, and therefore यहाँ का water is very very warm. And because of this warm water will become expand. As it expands, उसका density will increase or decrease. उसका density will decrease expansion के कारण, वो हल्का हो जाएगा. This water is extremely cold. उसका density will increase. Now this cold warm water from the tropics will try to go towards the polar regions. And this cold water from the poles, after it reaches here, it will become very heavy, it will sink, and after sinking downwards, it will try to come towards the tropics, and it will come upwards. This three-dimensional circulation of ocean water is what is known as an ocean currents. And importance of ocean currents: fishing, biodiversity, heat waves, cold waves. जहाँ जहाँ hot warm ocean current है वहाँ पे heat waves, जहाँ पे cold ocean current है वहाँ पे maybe cold waves. We have done the case study yesterday. जहाँ पे both the currents are mixing, these are the best region for the fishes. जहाँ पे the warm ocean current is there, there is more evaporation. If there is more evaporation, there is more humidity in the atmosphere. If there is more humidity in the atmosphere, there is more rainfall. जहाँ जहाँ cold ocean currents है, there is no evaporation, and because there is no evaporation, in spite of cloud formation, clouds ही नहीं बनेंगे. Cloud formation छोड़ो, clouds ही नहीं बनेंगे, there will be no rainfall. That is the deserts. So can I say temperature plays an important role in determining the ocean ka movement in the form of currents? Fine. Biodiversity, climate of a region, and fishing, economic activities also. Tourism, temperature of the ocean, does it play an important role? How? Foreign tourists coming to tropics, including India, Mauritius, Seychelles, etc. Why? Because वहाँ का oceans are very very cold, so they come here to enjoy the sea. Fine. लिखो कुछ मत, जैसे क्वेश्चन पूछा है वैसे सिर्फ याद रखना कि कंक्लूजन इस सब में टेम्परेचर प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग द
can determine in the form of current in determining density and current are related. ये जो events है ये सब so all depend upon the temperature of the ocean. अगर पैसिफिक ओशन बहुत गर्म है तो अल नीनो, अगर पैसिफिक ओशन बहुत ठंडा है तो ला नीना, अगर अल नीनो है तो ड्रॉट्स इन इंडिया, ला नीना है तो वेरी वेरी हेवी रेनफॉल इन इंडिया. Fine. So can you write an answer on the heat budget of the oceans? What is the heat budget? You already know कहाँ से heat आ रहा है, you already know कहाँ से heat जा रहा है. So उसी को कहेंगे हम heat budget. So लिखो, बताओ मुझे heat budget क्या है ocean का, कहाँ से heat आ रहा है? From sun in the form of insolation plus convection कहाँ से? Through magma. Warm terrestrial land कैसे ट्रांसफर करेगी हीट टू द लैंड, टू द ओशंस? हाँ, कौन किसके कांटेक्ट में आएगा? कंडक्शन. टेल मी दिस वर्ड. सो लैंड इज ट्रांसफरिंग द हीट थ्रू द प्रोसेस ऑफ कंडक्शन एंड हीट ओशंस कैसे रिलीज करेगा? by radiation. It will radiate the heat. This radiation will be in the terms of short wave, long wave radiations. Long wave radiations. Will there be some evaporation that is associated? Right? So you already know what are the factors that are affecting the heating and what are the factors that are affecting the cooling. But so this is not the budget. Budget is कितना आ रहा है, exactly कितना जा रहा है, exactly कितना बचा है. Fine. So heat budget of the ocean, don't write maybe, it will be this is what is the heat budget of the oceans. डर जाओगे देख के, don't worry, there is nothing to worry. Total heat of the ocean is how much solar short wave radiations are coming, QSW, how much long wave radiations are given out, QLW, how much salinity
कैसे अफेक्ट कर रहा है उसको, वॉल्यूम कंडक्शन कैसे अफेक्ट कर रहा है, टेम्परेचर कैसे अफेक्ट कर रहा है. इट इज वेरी वेरी सिंपल. वी डोंट हैव टू रिमेंबर द स्टैटिस्टिकल डेटा कि 50% आ रहा है या 50% जा रहा है, right? But you will have to remember the equation. Answer will be very simple. Ki what is this flux, how it is calculated, what is the albedo, how it is calculated, which regions will have more heat budget, which regions will have less heat budget. So tell me one simple thing. If this is the equation, thoda equation may be change hai, but this is just for your understanding. If this is the equation, QSW, short waves, long waves, fine, SVT, conduction, convection, radiation, etc. Evaporation भी आएगा इसमें. In which region, not in which region, चलो, in equatorial regions कौन सा, which of the factor will be more dominant, SW, LW, SVT, क्या होगा? In the equatorial regions कौन सा ज्यादा dominant है? क्या मिलेगा ज्यादा oceans को? Sunlight मिलेगा. So QSW is more in the tropics, equatorial regions. Now the same question I am asking, whether QSW will be greater in the 0 to 5 degree north and 0 to 5 degree south, or 5 to 5 degree north and south, or it will be greater in 30 to 35 degree north and south. All is tropics and subtropics. सबसे ज़्यादा short wave radiations will be where? 10 to 10 degree north and south, या 23 to 35 degrees north, 23 to 35 degrees south. शॉर्ट वेव रेडिएशन मतलब सनलाइट सबसे ज्यादा कहाँ मिलेगा? सब ट्रॉपिक्स पे. क्यों? क्योंकि इन द इक्वेटोरियल रीजन्स, because there is a dominance of water bodies in the equatorial regions, because of the ITCZ, हमेशा हवा ऊपर उठेगी, हवा ऊपर उठेगी तो clouds बनाएगी, and clouds will block some kind of an short wave radiations. Getting it? Q SVT, volume temperature, flux temperature. Getting it? So ये है heat budget. Can I say once the clouds are formed, they will trap the heat in the form of long wave radiations? They will trap the heat. Which heat they are going to trap? The incoming solar radiation or outgoing long wave radiations? Long wave radiations. इसमें से which long wave radiations they will trap the most? How many long wave radiations are there? Microwave, radio wave, infrared, UV rays, कौन सा है long wave? और बाकी? Infrared, radio waves, long wave, microwaves, all are long wave radiation, but उसमें से सबसे ज़्यादा it will be trapped by, इसलिए मैं कह रहा हूँ equation थोड़ा change हो जाएगा. Don't worry about the equation. It will be trapped most by the clouds. They will trap this heat, and therefore equatorial region, though they receive less insolation, equatorial regions will be very very hot over the sea, resulting into generation of warm ocean currents. क्यों? क्योंकि सनलाइट कम है पर बादल है, there are clouds, and because of the cloud cover the infrared waves are trapped by the clouds, resulting in heating of the land masses. On other hand, in the desert region, subtropical high pressure belt जहाँ deserts है, वहाँ के समंदर में there will be less cloud formation. As there is less cloud formation, the days may be very very hot, the nights will be extremely cool, and therefore the diurnal pattern of the land and sea breeze, see, we are not doing climate, we are doing ocean, the diurnal pattern of the land and sea breeze will be affected. So though the temperature of the ocean is highest near the subtropical high pressure belt, 30 to 35 degree north and south, but tropical cyclones will originate between 10 to 35 degree north and south. समझ में आया रहा है? Because of the simple fact कि day का temperature will be very high over the oceans in the subtropics, रात का temperature will be some comparatively colder, but outside the subtropics, that is between 30 to 10 degree north
और 30 to 0 डिग्री नॉर्थ एंड 30 to 0 डिग्री साउथ, यहाँ पे क्लाउड कवर इतना ज्यादा है that it will trap the long wave radiations and therefore the heat won't be able to escape the oceans or the earth. Therefore oceans will keep on becoming hot and hot and वहाँ पे the oceans will develop the highest temperature. Highest temperature मतलब there is a two difference. If I ask you where is the highest temperature in India, आप कहोगे राजस्थान में. Which is the coldest place in India? You will say it Kargil. Fine. But if I ask you where is the average temperature high, you will say Kerala, Tamil Nadu. Permanent high temperature is where? In the between the Tropic of Cancer and the equator. Why? Because it is having permanent cloud cover, and because of the permanent cloud cover, tropical cyclones will develop here. Otherwise, agar tropical cyclone develops over the oceans in the desert regions, क्या होगा? दिन में tropical cyclone बनेगा, रात को मर जाएगा, because it is not going to get heat. सब clear हो जाएगा over the period of time. But are you understanding what I am trying to say? Tropical cyclones के लिए the temperature has to be permanently greater than 27 degrees Celsius, sea surface temperature, and the thickness of that sea should be around 60 meters. Thickness of the warm layer should be around 60 meters. So as a result of this, the tropical cyclones will develop between जहाँ पे cloud cover ज़्यादा है. क्यों cloud cover ज़्यादा है? क्योंकि it is going to trap the long wave radiations. फिर इसमें से कुछ बहुत आसान पार्ट है कि वॉल्यूम इंक्रीज डिक्रीज होने से, सैलिनिटी इंक्रीज डिक्रीज होने से, या कंडक्शन से कितना टेम्परेचर कम ज्यादा बढ़ रहा है. बट आवर मेजर आंसर विल बी बिटवीन शॉर्ट वेव रेडिएशंस कहाँ पे हैं, कहाँ पे लॉन्ग वेव रेडिएशंस है. समटाइम्स द शॉर्ट वेव रेडिएशंस कम एंड हिट द अर्थ सरफेस फॉर 6 months in a year. That is in the polar radiation. Polar waves, polar regions have sunlight throughout the at least 6 months in a year, and they have night time 6 months in a year. But still Arctic is frozen, Antarctic is frozen. Why? Because the short wave radiations are not absorbed, they are reflected, they hit the ice, and after hitting the ice they are reflected back directly to the space, जिसको हम कहते हैं albedo. Albedo is the reflective property of something, and this is what is the heat budget of the oceans, कि कितना आ रहा है. फैक्टर्स आपको पता है. नाउ उन फैक्टर्स का एप्लीकेशन सिर्फ हमें सीखना है. फाइन, क्लियर? सो हीट बजट, the heat budget of the oceans, the heat budget of the oceans is important for maintaining the global heat balance, is important for maintaining the global heat balance, as well as sustaining life on the earth. Oceans are the storehouse of heat. Oceans are the storehouse of heat. And therefore a balance has to be maintained between incoming heat and the outgoing heat एटमॉस्फेयर. अंडरलाइन, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ऊपर के अगर आपको याद रहे ना रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा.
atmosphere absorbs only, atmosphere absorbs, ये direct absorption है, atmosphere absorbs only 1/5 of the solar energy. Full stop. Oceans absorb, oceans absorb half of the solar energy. Oceans absorb half of the solar energy that reaches the earth. कितना बचा? The rest of the heat energy, तो याद रखने की जरूरत नहीं, the rest of the heat energy is transported by ocean currents, is transported by the ocean currents. मतलब सिर्फ 5 पार्ट will be absorbed by the land directly, बाकी का सारा ocean currents में ही घूम रहा है, is transported by the ocean currents. Getting it? The oceans lose the energy, ocean lose the energy by evaporation and infraradiation, and infrared radiation, by evaporation and infrared radiation, infrared radiation. The heat budget, the heat budget of the ocean is given by the heat budget of the ocean is given by formula, write this formula, तीन चार फॉर्मूले हैं नेट पे, सो एक ही किसी को चीज को फॉलो करो. कोई S और L को एक कंबाइन करेगा और कहेगा H, कोई S और V को कंबाइन करेगा कहेगा E. हम सबसे इजी कर रहे हैं, इसमें Q ज्यादा है. इंटरनेशनल अगर इफ यू सर्च ऑन द नेट देयर यू विल फाइंड अक्रॉस 3 डिफरेंट फार्मूलाज. एक फार्मूला में QS प्लस QL प्लस QH है. Then what is H? S plus L plus V. एक फॉर्मूला में QS plus QLW plus QS plus QH है. What is H? QL plus QV. It becomes then more complicated. So इससे अच्छा you just remember, even if you write instead of L T, it won't matter. Don't worry about the shortcuts. Where QSW is the short wave energy radiated from the sun absorbed by the oceans, LW is the net flux of IR, infraradiation. IR लिख सकते हो, infrared waves from the sea. कितना infrared wave sea is giving back, that is Q. LW. QS
flux of IR from the sea, infrared from the sea, in the form of long waves, QS. Can someone tell me what is flux? कितनी एनर्जी या मैग्नेटिक फील्ड? यहाँ पे हीट कितने, एक एरिया में से कितनी हीट आ रही है या कितनी हीट जा रही है, दैट इज द फ्लक्स, FLUX. Where QS is the heat out of sea due to conduction, Q by water, by conduction, yes, by touching, Q नेगेटिव आएगा. डिपेंड करता है एरिया के ऊपर. अगर नेट पे ढूंढोगे हीट बजट ऑफ द ओशन, कहीं नहीं मिलेगा आपको हीट बजट ऑफ द ओशन. मिलेगा हीट बजट ऑफ अरेबियन सी, हीट बजट ऑफ जावा सी. वहां पे फिर नेगेटिव पॉजिटिव आएगा. वी आर डूइंग वेरी वेरी जनरल. Scientists when they study it on the basis of C, and that too in 3, अगस्त में कितना, जून में कितना, दिसंबर में कितना. That is the real heat budget. हम तो बहुत सुपरफिशियली कर रहे हैं. If you really want to study heat budget, you are not never going to study the heat budget of the entire ocean. You will study the heat budget of Arctic, you will study the heat budget of Antarctic to really understand global warming is creating the impact or not. And that heat budget will depend upon clouds है या नहीं है, sunlight है कि नहीं है. So it will depend upon 3 major seasons. December peak winters, June peak summers, August only in the Arabian Sea region, that is peak monsoon season. ये पॉजिटिव एंड नेगेटिव इंडियन ओशन डाइपोल है क्या? हीट बजट ही तो है. अल नीनो ला नीना क्या है? हीट बजट ही है. कितना इंसोलेशन आ रहा है, कितना ओशन गर्म रहेगा, कितना ठंडा रहेगा. This all is heat budget. Madden-Julian oscillation. This all is heat budget. By understanding the heat budget, then they make climate change के models. And by putting that climate change का models, they tell you this may be the impact or this may not be the impact. Right? So it is thankfully हमारे syllabus में it is very very superficial. एक क्वेश्चन का कभी heat budget कर ही नहीं सकते आप. Understanding? For example, can you make a budget? See, when you are making a budget, एक जनरल बजट बनाते हो आप. मेरा मंथली एक्सपेंस कितना है, उसमें भी आप बनाते हो मेरा टिफिन का कितना, फाइन, मेरे आने जाने का कितना, मेरे बुक्स का कितना, मेरे पेपर का कितना. हिंदू 8 रुपया है तो मैं एक्सप्रेस पढ़ के हिंदू ऑनलाइन पढ़ूँ या नहीं, ये सब बजट में ही तो आएगा. यू कैनॉट मेक अ एंटायर बजट ऑफ एनीथिंग एंड देन यू डिसाइड कि whether you are spending more, you are or spending less, and then you come with the priorities key. So the same thing is there. This is very very superficial. Where was I? Q S. QL. QS is due to conduction लिखा है हमने. QL is the flux of heat. Is the flux of heat. Flux इसलिए हम वर्ड यूज कर रहे हैं, आ रही है या जा रही है, दोनों वर्ड्स आएंगे फ्लक्स में, गेनिंग और लूजिंग. दैट इज हीट कितनी पास हो रही है उस एरिया से. फ्लक्स ऑफ हीट ड्यू टू इवेपोरेशन, ड्यू टू इवेपोरेशन. QV is the flux of heat, or QV is heat carried by the ocean currents. Heat carried by the ocean currents. Ocean currents. Don't put full stop etc. मुझे बताओ what is QS? Heat lost by or heat gained by which process? Conduction, touching. QV,
QL is due to evaporation and QV is due to ocean currents. Conduction, touching, waves aa rahi hai, ja rahi hai, water particles are touching each other, magma is erupting and thus it is getting touched by the water particles and it is transferring the heat, getting conduction. Can I say evaporation is nothing but convection? Physics क्या कहता है? There are three mechanisms of heat transfer: conduction, convection and radiation. Fine, you find all these things. So this is convection. Evaporation is nothing but convection. The heat will vertically rise up, that is convection. If anything heat is passed by touch, that is conduction. And ocean currents क्या है? Climate या oceanography में और एक mechanism है heat balance का, and that is advection, horizontal movement. Wind is advection, ocean current is advection. That is what I wanted to make you understand. Advection मतलब क्या? Horizontal movement. Convection मतलब क्या? Vertical movement. Conduction is by touch. मैंने किसी गर्म बर्तन को हाथ लगाया तो कंडक्शन. अगर कुछ चीज गर्म की, पानी उबलने लग गया और ऊपर जा रहा है, कन्वेक्शन. And advection only occurs on the earth. It does not occur generally in physics. But ocean current क्या है? Advection, वही तो बताया था मैंने कि the warm equatorial water becomes lighter than the surrounding water और वो फिर ocean current की तरह move करता है horizontally. बहुत ही simple है, scientific थोड़ा understand करो. Short waves, long waves, conduction, advection and convection, advection and conduction. These are the three things. अब अगर ये समझ में आया तो आंसर आपका रेडी है. कहाँ पे शॉर्ट वेव रेडिएशंस कहाँ पे ज़्यादा है, कहाँ पे लॉन्ग वेव रेडिएशन ज़्यादा है, कहाँ पे कन्वेक्शन ज़्यादा है. कन्वेक्शन अगर बहुत ज़्यादा है तो क्या बनेगा? दैट इज ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, वो सब बनेंगे. एडवेक्शन कहाँ पे है? ओनली इन द रीजन्स ऑफ ओशन करंट्स एंड विंड्स. गेटिंग इट? एंड कंडक्शन कहाँ पे? ऑन द कोस्ट. This is what is the heat budget of the oceans. Very superficially you have to remember. Next line. While calculating the heat budget, we consider oceans as a closed system. While calculating the heat budget, we consider oceans as a closed system. As a closed system. What is a closed system? Energy and the matter is not transferred outside. That is a closed system. If it is coming from outside, it is an open system. Why we are writing it as a closed system and considering this too? ये तो शॉर्ट वेव सन से आ रहा है. मतलब याद रखना, यहाँ पे हम ओशन एंड एटमॉस्फेयर का इंटरेक्शन की बात कर रहे हैं. वी आर नॉट कंसिडरिंग सन स्पॉट साइकिल्स. वी आर नॉट कंसिडरिंग हाउ मच द एक्लिप्स के समय कितना ज्यादा हो रहा है, कितना कम हो रहा है. वी आर टेकिंग अ वेरी सुपरफिशियल व्यू. So ब्रैकेट में याद रखना कि this is an example of systems analysis in geography. Heat budget of the ocean is an example of systems analysis in geography. Tank is an example of systems analysis in geography. Davis is an example of systems analysis in geography. तभी मैंने बताया नहीं क्योंकि तब समझ में नहीं आता. But अब what is this systems analysis? जब भी क्वेश्चन आएगा रिगार्डिंग पेंग डेविस, वो तो मैं बाद में लिखाऊंगा, बट जब भी क्वेश्चन आएगा, विदाउट फॉरगेट mention that this is an example of QR, quantitative revolution, and systems analysis in geography. What is systems analysis? What is QR? Is the application of scientific principles over generalization of laws, application of general theory making in social sciences such as geography, history, etc. That is what is known as a systems analysis.
तो यही तो है ना, समथिंग इज हैपनिंग एंड इट इज गिविंग अ रिस्पॉन्स, उसी के ऊपर तो आप लॉ बनाओगे। हीट बजट क्या है? It is coming, it is coming, it is going given out, it is coming, it is given out. This will be the impact on the total heat, this will be the impact on if the heat is less. कोई भी equation, कोई भी scientific generalization when we are making, remember it is systems analysis, कि अगर sunlight है तो क्या होगा, अगर clouds है तो क्या होगा, this is what is the systems analysis. Everything is systems analysis. Yes, yes. Today's geography what we are studying is systems analysis. River है, river का speed ज़्यादा है, erosion capacity ज़्यादा है, systems analysis. Speed decrease हो रहा है, deposition हो रहा है, systems analysis. आप एक river को study करते हो और ये law बनाते हो और पूरी world के river को apply करते हो. This is what is science. Specific to general. That is what is the systems analysis. See, very briefly, लिखना कुछ भी मत समझो, what is systems analysis. Geography as a discipline passed through different paradigms. Paradigms means different phases. Out of that, one paradigm or one phase was the phase of quantitative revolution. Before the coming up of quantitative revolution, one paradigm was कि determinism है या possibilism है, that is already told you. फिर उसके बीच का मतलब whether man should be given as an importance possibilism or whether the nature should be given as an importance, that is the determinism. उसका solution निकल आया in the stop and go determinism by the Griffith Taylor. उसने कहा neither man neither nature, दोनों का coexistence. Then the next paradigm in geography came up with the rise of possibilism. As possibilism कहता था human being is supreme than the nature, and human being by their motivation, human being by their determination can change anything. इसीलिए the focus shifted on study of human beings. अब human beings का nature by motivation etc is determined by their culture, by their surroundings. Understanding? हिमालय कितना इरोड होगा वो सब हिमालय के नेचर या सराउंडिंग या अपब्रिंगिंग पे नहीं है, राइट? बट ह्यूमन बींग्स का तो है. How much motivated it will be, how much motivated it not will be. As a result of this, possibilism gave rise to a school of geography which is known as regional geography. उन्होंने कहा कि ओशन करंट्स तो सब मत पढ़ो, माउंटेन्स थियरी बिल्डिंग वो सब मत करो, पढ़ो स्पेसिफिक हिमालयाज ही क्यों बने, हिमालयाज में से माउंट एवरेस्ट ही क्यों बना, वेस्टर्न घाट्स क्यों बने. दिस इज व्हाट इज इंडिया. अगर पढ़ना है तो इंडिया का क्लाइमेट क्या, इंडिया की सॉइल क्या, व्हाट इज द इकोनॉमिक ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, व्हाट इज द डेमोग्राफी ऑफ इंडिया, एंड देन study it with the same applied to the USA. This school of geography is known as the regional geography या the school of areal differentiation. समझ में आ रहा है? एरिया को डिफरेंशिएट करना. The other school that was in the geography was known as systematic geography, जो कहता था no, geography is a science, we should not be concerned with particular, we should be concerned with general. What is general? You study, particular leave it. Regional geography says geographer should be concerned with particular and not over generalization. इसके कारण there was a Hartshorne and Schaffer debate. Two geographers started debating, Hartshorne and Schaffer. Ultimately, it resulted into geography being closed down by the Harvard University, geography as a discipline, because Harvard University कहता था कि there is no place for geography as it is not at all scientific. क्योंकि हार्वर्ड में हम पढ़ाएंगे क्या, फ्रेंच पढ़ाएंगे या इंडियन पढ़ाएंगे, ऐसे तो सिलेबस कभी खत्म ही नहीं होगा. So because it is not having any generalization, general laws, general tendencies, listen to this very very carefully. Fine? क्योंकि ये चैप्टर बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग है, which I am telling you now. This generalization, this laws, this etc thing in geography, Schaffer Hartshorne debate के बाद the problem was geography का, people said geography को close down करो. You don't have to have a separate discipline of geography because there is geology to deal with geomorphic features. There is atmospheric sciences to deal with atmospheric features. There is hydrological sciences to deal with ocean currents. There is economy to deal with economics. There is school of public administration to deal with regional planning. Why there is a need of geography?
And as a result of this, Harvard University ने geography बंद कर दिया because geography was not at all scientific. The geography was closed down. Some American and European geographers came together और उन्होंने कहा geography को हम scientific बनाएंगे ही. What is science? Science में there are always general rules. What is science? Science में always the outcome is predicted. What is science? Science में there is no rule to emotions. Fine? Gravity will not depend upon the face of a person. सबके ऊपर same ही apply करेगा. Right? That is what is science. So all this thinking in geography, when the most of the geographers came together, this thinking of geographers is known as positivism. Positivism को कहते हैं emotions have no place in the science. Speculations have no place in the science. Everything that is seen has to be proved, and then if it is proved, that only truth has to be accepted. Geography का नहीं है, ये बहुत पुराना स्कूल है positivism का. Fine? Raja Ram Mohan Rai was also positivist. Getting it? If the religion does not allow you to live properly, change the religion. ये सब positivist ही कहेंगे. They are never emotional. So उनका हमेशा cause effect होता है. Cause क्या है, effect क्या है. And this application of positivism in geography is known as systems analysis. Systems analysis आने के बाद geomorphologies में law बने Davis-Penck, मतलब उनको use किया गया. Oceanography में law बने ocean budget, heat budget, salt budget. Climates में law बने Köppen, Thornwright, Trevartha. Getting it? Environment ecology में law बने, that is the what you have done, food chain, food web. This is all is systems analysis. इतना ज़्यादा impact है, it is on the school of geography. Getting it? And पूरा section B is systems analysis. Industrial location theory, CBD जो मैंने ये लिखाया था आपको regional planning के ऊपर, एक ये दिल्ली कैसे बड़ा है वो सब. Is it not scientific कि रास्ते ऐसे बनाओ? This is what is the systems analysis. You will always, to score high marks in paper, you will have to always relate sections. एक चैप्टर को दूसरे चैप्टर में. ये जो कर पाता है they score very good marks. ये जो नहीं कर पाता उनको average marks आते हैं. Because you see heat budget, Davis, Penck, ये सब में ज़्यादा improvisation का skills नहीं है. Improvisations will be, it is not polity कि आंसर बहुत ही अलग आ जाएगा, आप कुछ अलग ही अप्रोच दोगे. नहीं, आपको डेविस ही बताना पड़ेगा. But what will fetch you marks is if you can put this thing. So that is why. Getting it? Behavioralism. Behavioralism. Behavioralism is not systems analysis. Humanism is not systems analysis. Radicalism is not systems analysis. Humanism is not systems analysis. ये तो against positivist है ना. Getting it? So next point. Using the principles of systems analysis, geographers started measuring heat flux and buoyancy flux of the oceans. Heat flux is changes in the heat energy. Heat flux is the changes in the heat energy. कैसे हीट होगी? इनपुट से या आउटपुट से? Changes in the heat energy. In the ocean लिखूंगा या surface of the ocean लिखूंगा है? क्या है? कहाँ पे हीट चेंज हो रहा है? पूरे 6 किलोमीटर में या सिर्फ 1000 किलोमीटर में?
सिर्फ 1000 किलोमीटर में. चेंजेस इन द हीट एनर्जी थ्रू ब्रैकेट में इनपुट एंड आउटपुट फ्रॉम द सी सरफेस, from the sea surface. What is buoyancy? Upward force that is applied by the water, by the liquid. Buoyancy मतलब floating. Can I say? Resistance. Buoyancy कैसे determine होती है? Density से, right? अगर fresh water ज़्यादा है तो density कम है, डूबने के chances ज़्यादा है. अगर saline water ज़्यादा है तो density ज़्यादा है, water का upward force बहुत ज़्यादा होगा. So why we are putting buoyancy flux in the heat budget of the ocean? Buoyancy flux we are putting in the heat budget of the oceans कि जहाँ जहाँ fresh water is added to the oceans, it changes the density of the oceans in the terms of salinity. And जहाँ जहाँ salinity change हो जाता है वहाँ पे evaporation change हो जाता है. Saline water is easily evaporated. Fresh water is not easily evaporated, and thus salinity or buoyancy affects the heat budget. इसीलिए we measure the buoyancy flux also. Getting it? Buoyancy flux is the changes in the energy, that is caused due to change of density and heat by addition or removal of fresh water. Getting it? You can directly write, अगर ये difficult लग रहा है, buoyancy flux is caused due to addition and removal of heat by the fresh water. अब कैसे addition and removal of heat by the fresh water? Imagine if there is more fresh water, will there be more evaporation? And if there is more, or can I say evaporation will increase the density? Because water will become more saline and density will increase the buoyancy. Fine. Upward flux. Example. Evaporation increases the buoyancy flux. कुछ नहीं है, हीट बजट का है इसलिए हम कह रहे हैं इवेपोरेशन इज इंक्रीजिंग द बुयांसी. अगर ये होता सैलिनिटी तो हम लिखते हीट बजट दैट इज इवेपोरेशन इंक्रीजेस द सैलिनिटी. गेटिंग इट? What we have written is directly this. Evaporation increases the buoyancy. Indirectly कैसा? Evaporation increases the salinity. Saline water is more denser and therefore the buoyancy is greater. किस geographer ने buoyancy use किया था oceans का? Continental drift, Wegener ने. Forces responsible for drifting में buoyancy use किया था oceans का, which is obviously not possible. Getting it? समझ में आ रहा है सब? Concept Wegener ने कहा था Seal floats on seema due to buoyancy. तो buoyancy के concept को use किया गया था उसमें. ये लोग क्यों use कर रहे हैं? To understand the heat. जहाँ पे density ज़्यादा है due to salinity, वहाँ पे evaporation ज़्यादा होगा.
ड्यू टू सैलिनिटी, वहाँ पे इवेपोरेशन ज़्यादा है। यस, इसीलिए तो यूज़ कर रहे हैं। यस, heat flux is measured by heat flux is measured by heat flux is measured by aircrafts aircrafts and satellites aircrafts and satellites. कैसे? By the process of aerial photography. एरियल फोटोग्राफी इज अ कंसेप्ट, अभी आपके प्रीलिम्स में नहीं है। जब ज्योग्राफी ऑप्शनल हुआ करता था प्रीलिम्स में, तब कार्टोग्राफी वाज अ सेपरेट टॉपिक जिसके ऊपर 10 से 12 क्वेश्चन आते थे इन प्रीलिम्स। सो उसमें एरियल फोटोग्राफी हुआ करती थी। एरियल फोटोग्राफी में डिपेंडिंग अपॉन द टेम्परेचर, डिपेंडिंग अपॉन मॉइस्चर, फोटोग्राफ्स के कलर्स चेंज होते हैं। सो फॉर एग्जांपल, इफ अ ग्रीन कलर इज देयर इन द एरियल फोटोग्राफी, ऊपर से सैटेलाइट से अगर फोटोग्राफी लिया, एट व्हाट एंगल? ग्रीन कलर है मतलब इट इज अ प्लेन रीजन, इट इज नॉट फॉरेस्टेड। ब्लू कलर है मतलब ग्राउंड वाटर लेवल इज वेरी हाई। रेड कलर है मतलब हीट इज वेरी हाई, द एरिया इज अ ड्रॉट प्रोन। येलोइश कलर है मतलब उसकी हाइट ज्यादा है। सो दिस इज व्हाट इज द, देयर आर डिफरेंट रेज यूज्ड इन, कंसेप्ट इज एरियल फोटोग्राफी। जनरली आईआर यूज करेंगे, बट वो आईआर में कलर बैंड्स यूज करेंगे वो लोग। यस, इंफ्रारेड एरियल फोटोग्राफी से सब कुछ डिटेक्ट हो सकता है, कितना गहरा है पानी, जमीन के अंदर कितना ग्राउंड वाटर है, कितना नहीं। दैट इज व्हाट इज एटलस में जो कलर कोड है, दैट इज एरियल फोटोग्राफी। गेटिंग इट? एटलस के अकॉर्डिंग डेंसली फॉरेस्टेड इज नॉट ग्रीन। इन योर एटलस ग्रीन इज प्लेन, येलो इज प्लाटू, brown is higher parts of the plateau, dark brown is mountain, gray is glacier. It has nothing to do with the plains, densely forested. Give me the atlas. ये densely forested है. What is there? Desert. It is green in color. It is a plain region. This is a plateau. Higher parts of the plateau, dark brown. Still dark brown, Himalayas. Gray or highest parts, glaciated, ice caps. This is what is the aerial photography. Color codes in simple manner. It has nothing to do with green matlab tree, shelf, slope or deeper part. ओशन इसलिए ब्लू दिखाते हैं क्योंकि स्कैटरिंग ऑफ ब्लू लाइट सबसे ज्यादा होता है, तो वैसे भी हमें पानी ब्लू ही दिखता है, इसलिए ब्लू लाइट स्कैटर्स द मोस्ट, उसका शॉर्ट वेवलेंथ है। अंडरस्टैंडिंग? नासा ने मतलब वो हमारे सैटेलाइट्स भी कर सकते हैं। नासा आपके घर के अंदर की भी फोटो खींच सकता है। याद रखना, अगर व्हाट कैन बी डन बाय रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट, हमेशा आंसर विल बी ऑल ऑफ द अबव। सब कुछ कर सकते हैं रिमोट सेंसिंग से, ग्राउंड वाटर, फॉरेस्ट फायर्स, ड्रॉट, पॉपुलेशन, सेटलमेंट पैटर्न, सब कुछ एक्सेप्ट नेविगेशन ऑब्वियसली। यस, दैट इज ट्रू। नहीं, इंडियन राइनो इज फाउंड ओनली इन इंडिया। क्या था इस साल आंसर?
नेपाल में भी था। ओनली वाला हमेशा दो स्टेटमेंट थे, एशियाटिक लायन इज फाउंड ओनली इन इंडिया, वन हॉर्न राइनो इज फाउंड ओनली इन इंडिया, दोनों स्टेटमेंट थे। So इसमें से सिर्फ एशियाटिक लायन इज फाउंड ओनली इन इंडिया वाज ट्रू, वन हॉर्न राइनो इज फाउंड इन इंडिया, इन नेपाल, इन भूटान। Fine. So next, the study of buoyancy flux, the study of buoyancy flux and the heat flux helps in building weather prediction models, helps in building weather prediction models, weather prediction models। ये क्यों हम स्टडी करते हैं हीट बजट? टू जस्ट टू बिल्ड अ वेदर प्रेडिक्शन मॉडल। QSW क्या क्या अफेक्ट करेगा? QSW इनकमिंग सोलर रेडिएशन। So QSW, can I say it will be greater in the short wave radiation, will be greater in the tropics? पूरा tropics, अब इसमें सब tropics तो संबंध याद रखो। So QSW is affected by, tell me yes or no, fine, is affected by the configuration of land, मतलब white color की है या black color की है, right? मतलब the color of the land, albedo, if it is lighter in color, influx क्यों होगा? It will be directly reflected। मैं एक जनरल पूछ रहा हूँ, ओशंस में ऑब्वियसली नहीं लिखेंगे, अल्बिडो ओशंस में भी होता है। आइज, मैं पूछ रहा हूँ आपको यस और नो, यस और नो। SW क्या क्या अफेक्ट करेगा? फॉरगेट यू आर डूइंग ओशनोग्राफी, टेल मी यस और नो। QSW will be affected by configuration of the land, color of the land, short wave radiations, length of a day, particles present in the atmosphere, if there is more of a dust particles they will absorb, pollution। अब इसमें से ओशंस पे क्या 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 आ सकता है? पोल्यूशन और सब आंसर में इतना आएगा नहीं, लेंथ ऑफ द डे विल बी डिटरमाइनिंग मोस्ट। QSW, फाइन, गेटिंग इट? शॉर्ट वेव कितना इंसोलेशन इज कमिंग इज डिटरमाइंड बाय द लेंथ ऑफ द डे एंड ऑब्वियसली द पार्टिकल्स, गैसेस दैट आर प्रेजेंट इन द atmosphere. Water vapor for example will absorb both short wave and long wave radiations. Getting it? So QSW depends upon length of the day, comma effects of the atmosphere, and effects of cloud, effects of the cloud, एटमॉस्फेयर एंड क्लाउड का इफेक्ट क्या है? स्कैटरिंग करेगा, नहीं करेगा, स्कैटर करेगा तो लेस अब्जॉर्प्शन, ये सब राइट, लिखने की जरूरत नहीं। एग्जैक्टली कैसे कैलकुलेट करते हैं वो QSW, इट इज बाय दैट इक्वेशन, डोंट राइट इट, वैसे भी याद नहीं रहेगा इतना, और वैसे हमें 600 वर्ड में आंसर भी नहीं लिखना है, मैक्सिमम इन 250 वर्ड्स। So Q is equal to SW is given by S by 4, incoming solar radiation divided by 4 into 1 minus 0.009 C. C is the cloud cover, percentage of cloud cover in the sky, and they then will calculate. Fine, but कोई जरूरत नहीं। C को कैलकुलेट करने का अलग तरीका है।
the general distribution, the general distribution of average annual QSW QSW is shown by or can be shown by the following diagram. Draw this diagram. Can be shown by the following diagram. दो hypothetical continent, world, equator, understanding this very simple diagram. 30 degree north to 30 degree south is heat surplus region, उससे ऊपर is the heat deficit region. Sorry. अगर QS के 100 यूनिट्स है दोनों, 80 यूनिट्स will reach the land, only 25 units will reach the ocean surface. Why is it so? Why there is less short incoming solar radiation over, ये GS में आपको एक बार क्वेश्चन भी पूछा है, you will understand this question. Can I say QS दोनों 100 यूनिट्स है, in the atmosphere 100 में से 80% sunlight is reaching on the land, but over the oceans 100 में से only 25% of the sunlight is reaching, बाकी का is reflected back into the space because of moisture, cloud cover, dust particles, salt particles, scattering, absorption. So GS में generally prelims में ये question पूछते हैं, the albedo of ocean is greater than that of a land, true or false? Getting it? Albedo, reflection ज़्यादा हो रहा है over the oceans. Forty-five units
are reflected back into the space, 10 units are absorbed, and only 25 units will reach. वो जो है 80 यूनिट्स क्यों पहुंच रहा है, दैट इज हीट बजट ऑफ द एटमॉस्फेयर, दैट इज नॉट व्हाट वी आर डूइंग नाउ. Can I continue? Similarly, QLW, similarly QLW, QLW is determined by presence or absence of moisture, presence or absence of moisture, thickness of the cloud cover, thickness of the cloud cover, water temperature, etc. Water temperature, etc. Thickness of the cloud cover कैसे? अगर क्लाउड कवर ज्यादा थिक है तो लॉन्ग वेव रेडिएशंस को वो अब्सॉर्ब करेगा, शॉर्ट वेव रेडिएशंस को आने नहीं देगा, लॉन्ग वेव रेडिएशंस को अब्सॉर्ब करेगा. गेटिंग इट? बहुत सिंपल कंसेप्ट है, सिर्फ थोड़ा एक बार सुनना पड़ता है ध्यान से, उसके बाद कंसेप्ट इज वेरी इजी. SW आपने बता दिया, LW बता दिया, इवेपोरेशन कब होगा कब नहीं बताने की जरूरत है, ये सबको पता है. इफ द टेम्परेचर इज वार्मर देयर विल बी no evaporation, if the temperature is colder there will be, sorry, if there is a temperature is warmer there is evaporation, and if there is cold there is no evaporation. Similarly it depends upon humidity, if the air is already humid there will be less evaporation. And ocean currents कैसे डिटरमाइन करेंगे वो तो एक अलग चैप्टर ही है, ड्यू टू विंड. सो एक लास्ट पॉइंट रिगार्डिंग द हीट बजट. Similarly the process of evaporation, conduction, and advection are influenced by humidity, comma, wind pattern, right? Wind pattern है कि नहीं? If the wind is moving towards the right due to Coriolis force, ocean currents also move to the right, comma, air-sea interaction, as well as nature of the surrounding continents, maximum exchange of the heat, that is maximum heat flux भी लिख सकते हो, occurs in the subtropical and temperate belt, because both equatorial and polar regions occurs in both subtropical and temperate belts, because both equatorial and polar regions have constant temperatures. इक्वेटर पूरा गर्म है,
साल भर. Polar regions are completely cold साल भर. Significance of the heat budget. With growing anthropogenic climate change, with growing anthropogenic global warming, growing anthropogenic global warming, climate modeling and prediction, climate modeling and prediction has become important for day-to-day economic activities, has become climate modeling and prediction has become important for day-to-day economic activities as well as future settlement pattern. By studying the heat budget, by studying the heat budget, we can understand variations in the climate such as monsoon. We can understand the variations in the climate such as monsoon, climate such as monsoon, and also future trends of rise in the sea level. Future trends of rise in the sea level. For example, Indonesia has decided to shift its capital Jakarta to a new island because Jakarta का 2/3 area will be below the sea by 2050. ये हीट बजट से ही तो पता चल रहा है, अभी नहीं पता, बट दे हैव सीन हाउ द टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग, कितना सी लेवल राइज हो रहा है, कितना सी लेवल राइज हो रहा है. सो आगे अगर सेम, इसलिए कभी भी देखो क्लाइमेट चेंज के न्यूज में एक चीज लिखी रहती है, इफ द सेम एमिशंस कंटिन्यू, इफ द सेम ट्रेंड्स कंटिन्यू, तो फिर ये होने वाला है. क्यों सेम ट्रेंड्स? Because they take it now, then they make a model with the trends, and then they calculate the heat budget. And heat budget say, then they put that into the computers, quantitative revolution, and then outcome देखते हैं, prediction देखते हैं. IPCC यही करता है, इसलिए लिखा होता है if the same trends continue, तो फिर जकार्ता नहीं रहेगा by 2050 because 2/3 area will be below the sea. इंडोनेशिया ने नया कैपिटल कहाँ लिया है? बोर्नियो आइलैंड पे. सुमात्रा, जावा, बाली, और उसके बाद there is an island here that is Borneo. So इसके ऊपर they have decided to relocate the new capital. I guess yesterday's news or day before yesterday's news. कब की न्यूज है ये? 3 दिन पहले की न्यूज. या गंगा सागर आइलैंड में हम वॉल क्यों बना रहे हैं? ये सब क्या है? क्लाइमेट चेंज की मॉडलिंग है, या हिमालयन ग्लेशियर्स आर एक्सपेक्टेड टू मेल्ट बाय 2050. सबका आंसर 2050 क्यों है? कंप्यूटर मॉडल से. जरूरी नहीं है ऐसे होगा ही. No, never. Wall will stop it, and one day the wall will break. It will result into flash floods. It is not a good option. Flash floods करेगा कभी भी wall बनाने से. वो ट्रम्प का
गल्फ ऑफ मैक्सिको में व्हाट दे डू, नहीं नहीं नहीं, I'll tell you what is the science behind that. Cyclones always enter this narrow region of the Gulf of Mexico and then स्पाइरल हो जाता है, विंड्स को अट्रैक्ट करता है. यूएसए दो चीजें करता है. यूएसए हमेशा सबसे पहले यहाँ पे एरोसॉल स्प्रे करता है जब भी साइक्लोन आता है. तब वो एरोसॉल्स होते हैं कूल एरोसॉल्स. वो एरोसॉल्स बिकॉज दे स्प्रे द एरोसॉल्स, सी का टेम्परेचर रिड्यूसेस एंड सी का टेम्परेचर रिड्यूसेस तो साइक्लोन स्टार्ट्स डाइंग as soon as it enters the political boundary of USA. And when the cyclones start dying, obviously because cyclones के लिए the higher sea surface temperature चाहिए greater than 27 degrees Celsius, USA will spray upper layer of aerosols there, and as soon the aerosols get sprayed, the temperature drastically drops. As the temperature drops, the wind starts reducing in intensity, and then the winds when they start reducing in intensity, उस reduced wind को walls रोक सकती है. But USA is building the wall not for the winds. वो साइक्लोन को तो खत्म ही कर रहा है. They are to reduce the storm surge, कि जो sea waves है जो जाके coastal regions को flood कर देती है in USA. For that there is the wall, not for the cyclones. नहीं तो cyclones तो wall को कभी भी तोड़ सकता है. 600-700 kilometers per hour की wind will obviously break the wall. It is just to reduce the storm surge, because USA storm को बहुत कम वहां तक आने देती है. Even then, Mexico में it is devastating. USA में it is not devastating. Yes, yes. USA तो कभी किसी को charity देगा ही नहीं. It will let people die in Haiti, let people die in Cuba, but कभी aerosols थोड़ा और ज़्यादा नहीं स्प्रे करेगा. अपने इधर आ रहा है तो ही स्प्रे करेगा. वो तो चाहता है कि लोग मर जाए. उनकी इंडस्ट्रीज के लिए जितने लोग मरेंगे उतना उनकी इंडस्ट्रीज रन करेगी. नहीं. हाँ? न्यूक्लियर बॉम्ब कहीं पे भी डालना, साइक्लोन में तो बात छोड़ो, कहीं पे भी डालना इज डेंजरस. सो न्यूक का मतलब है दैट में बी अ स्लैंग. दिस इज द वे दे आर गोइंग टू न्यूक द साइक्लोन. न्यूक मींस डिस्ट्रॉय द साइक्लोन. दे मस्ट बी यूजिंग द स्लैंग. नहीं तो व्हाट इज द लॉजिक कि ट्रॉपिकल साइक्लोन आ रहा है, आप उसमें बॉम्ब डाल रहे हो और बॉम्ब घूम के वॉशिंगटन पे ही लग गया तो. सो इंडिया कैन ऑल्सो डू दिस थिंग्स, बट जो एरोसोल वाली टेक्नोलॉजी है, it has one side effect also, that aerosols will stay in the atmosphere, and secondly it kills the fishing industry of that region. But USA does not depend that much on fishing, इसलिए वो aerosol से storms को stop कर सकता है. Salinity, now one very fast this thing, very easy. What do you understand by salinity? It is nothing but amount of salt in grams present in 1 kg of seawater. How it is expressed? As I told you, it is expressed in parts per thousand. Based on this, we divide the water into 4 types on the basis of salinity. First, I will make you the entire structure, then we'll tell you what it is. The water can be fresh water, the water can be brackish water, the water can be saline water, या फिर जो मैंने वर्ड यूज किया था, the water can be brine water.
How it is determined? It is determined by simple concepts. That is, if the amount of salt present is between 0 to 5 parts per thousand, it is fresh water. If it is slightly greater than 5 parts per thousand to 35 parts per thousand, actually it is 34.99, then it is a brackish water. Chilka lagoon, Pulicat, Membanad, ये सब brackish water है. If it is greater than 35 parts per thousand to 50 parts per thousand, मतलब 50 gram salt, it is saline water. Sea water is saline. Lagoon का water is brackish. River water is fresh. But Sambar Lake, Dead Sea, जिसकी salinity is even greater than 50 gram, then it is what is known as an brine water. 50 grams in 1 kg of seawater. 50 gram salt is more than, is very high salinity. That is what is the brine water. Now coming to what are the factors that affect the salinity. We'll study this topic in two ways. One of the factor that affects the salinity is factors that increase the salinity. And there will be other factors that will decrease the salinity. Now, what are the factors that will increase the salinity? Some of the factors that increase the salinity will be evaporation. जहाँ पे evaporation is greater, salinity will be more. Example, Dead Sea, Red Sea. Fine. Can I say one of the factors that will also increase the salinity is size and location of the sea? It may also decrease the salinity, but I'll take it here only. देखो, for example, ये बर्तन है, fine, और there is one more big vessel here. दो मेरे पास बर्तन है, very easy to understand. One is a small vessel A, the other is the very big vessel B. दोनों में पानी है. If I put both the vessels at the same time, between or in the tropics, कहाँ से ज्यादा इवेपोरेशन होने वाला है? किसका ज्यादा इवेपोरेशन होगा? अगर मैंने A and B दोनों साथ में रखा in the tropics, किसका इवेपोरेशन ज्यादा होगा? जिसमें पानी कम है, that is A. So can I come to a general conclusion by in this that small and enclosed seas such as Red Sea, Dead Sea, if present in tropics, they will have more salinity because of more evaporation. And small and enclosed seas, अब देखो A and B को दोनों आप फ्रिज में रख दो, फ्रीजर में, कौन सा जल्दी फ्रीज होगा? Why B? कोई भी पानी, नॉर्मल पानी, किसको? ए ना, मीन्स हाँ, ए जल्दी फ्रीज होगा ना. फॉर एग्जाम्पल एक ग्लास ले लो आज और एक स्पून रख लो, एक ड्रॉप ऑफ वाटर वाला फ्रीजर में, कौन सा जल्दी फ्रीज होगा? मुझे ऑब्वियसली ड्रॉप. सो नाउ बिफोर आई गो, means before I further go, so can I say A will freeze faster? And freeze कैसे होगा? That is why at the start of the lecture I told you brine rejection theory. It is not for the exam. It will freeze faster by removing the excess salt from it. Salt नीचे चला जाएगा, deposit हो जाएगा नीचे या कुछ भी, but salt नहीं होगा. So can I come to a conclusion, if the location of the sea is small and enclosed in the polar regions, उसका salinity will be different, less.
इन द ट्रॉपिक्स उसका सैलिनिटी विल बी मोर. सो बाल्टिक सी का सैलिनिटी कितना है, रेड सी का सैलिनिटी कितना है 42%, डेड सी का कितना है 330 पार्ट्स पर थाउजेंड. बाल्टिक सी भी छोटा है बट कहां लोकेटेड है, इन द आर्कटिक सर्कल. व्हाट इज द सैलिनिटी 4.5 पार्ट्स पर थाउजेंड. उसका वाटर इज फ्रेशर देन गंगा का वाटर. Getting it? So that is the size and the location of the sea. Or onshore winds will increase the temperature or decrease the temperature? Onshore winds increase the temperature. So can I say and can I say here if the winds are offshore, cold water will come. Cold water जैसे ही आएगा evaporation कम हो जाएगा, so salt रहेगा पानी में mixed and therefore salinity will be less. Getting it? देखो डोंट वरी, इतना भी अगर आपको समझ में आ गया तो, क्योंकि क्वेश्चन सैलिनिटी पे नहीं आता, क्वेश्चन आएगा जो मुझे नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करना है बजट. देयर विल बी नो क्वेश्चन ऑन सैलिनिटी, फैक्टर्स अफेक्टिंग सैलिनिटी ये है. और कैन आई से वन ऑफ द फैक्टर दैट डिक्रीजेस द सैलिनिटी इज फ्लक्स, नहीं अब इनफ्लक्स, दैट इज इनसाइड from these are the factors that will decrease the salinity. So that is why you say ki Bay of Bengal is less saline as compared to the Arabian Sea, because सारी rivers कहाँ जा रही है, Bay of Bengal में, except नर्मदा एंड तापी जो बड़ी rivers है. Red Sea is more saline than Persian Gulf. Red Sea is more saline than Persian Gulf. Africa, Red Sea, Persian Gulf, Arabian Sea, Bay of Bengal. So ये है अंडमान सी, ये है बे ऑफ बंगाल, ये है अरेबियन सी, ये है पर्शियन गल्फ, ये है रेड सी. पर्शियन गल्फ में दो बड़ी रिवर्स जाती है, टिग्रिस एंड यूफ्रेट्स. रेड सी में कुछ नहीं जाता. सो डेड सी जो एनक्लोज्ड है जस्ट अबाउट द रेड सी, इट इज द मोस्ट सलाइन वाटर इन द वर्ल्ड. उसके बाद रेड सी, उसके बाद पर्शियन गल्फ, उसके बाद अरेबियन सी, उसके बाद बे ऑफ बंगाल, और सबसे कम सलाइन इन इंडियन ओशन, नदर्न इंडियन ओशन में इज अंडमान सी. व्हाई? वेदर एंड क्लाइमेट. सो जस्ट याद रखना फॉर प्रीलिम्स, मेंस के लिए तो आ चुका है ये क्वेश्चन कि काउंटर क्लॉकवाइज जाओ इंडियन ओशन में, सैलिनिटी कीप्स ऑन डिक्रीजिंग. क्लॉकवाइज जाओ इंडियन ओशन में, सैलिनिटी डिक्रीजेस. हाईएस्ट सैलिनिटी रेड सी, रेड सी के बाद पर्शियन गल्फ, पर्शियन गल्फ के बाद अरेबियन सी, अरेबियन सी के बाद बे ऑफ बंगाल, बे ऑफ बंगाल के बाद द अंडमान सी. राइट? आई लीव यू अर्ली टुडे बिकॉज मेरा प्रॉब्लम नहीं ठीक हो रहा है, बट still I am managing to take the class, but I have to show the doctor at 5:15. बहुत the pain is not going. So once from tomorrow I will be available. आज के दिन मुझे जल्दी भागने दो या फिर 7-8 दिन छुट्टी देनी पड़ेगी.
Yes. Class won't be cancelled. कल भी होगा class, whatever the pain it is. Because yesterday I was in tremendous pain. आज situation is fine.